Oh, I think I am live. Apologies for everyone who's waiting. I really don't want anyone to be here right now because it's 10 o'clock in Paris. So, presuming, I think it's 1:30 according to that in India. Anyways, I'm here to discuss what is titled as my UPSC interview story. Chat panel on it, but that's only for freedom of expression. I won't be taking any questions or anything because that will deviate me from the main topic, जो कि बहुत urgent है apparently because interviews are around the corner for UPSC, and I've been getting a lot of requests from Twitter and Instagram that where can people find my transcripts of my UPSC interview. पर मैंने यूपीएससी के इंटरव्यू देने के बाद कहीं भी ट्रांसक्रिप्ट अपलोड नहीं की. प्राइमरी रीजन फॉर दैट वाज basically कि interview is that phase in which all of your family members and friends are interested in knowing कि क्या पूछा बिकॉज प्रिलिम्स और मेंस में होता है कि आप कैंडिडेट्स में ही रहते हैं ज़्यादातर और योर पेरेंट्स एंड योर रिलेटिव्स एंड फ्रेंड्स डू नॉट रियली रिलेट टू व्हाट यू आर स्टडिंग यूजुअली. पर इंटरव्यू में होता है कि अच्छा क्या पूछा और तुमने क्या जवाब दिया, फिर क्या पूछा और तुमने क्या जवाब दिया. तो ये करते करते after the interview, I had to basically tell all of my relatives, whoever I visited, my dada dadi, nana nani, mama mami, चाचा चाची कि क्या इंटरव्यू में हुआ, क्या पूछा और तुमने क्या बोला और उसने क्या बोला, फिर तुमने क्या बोला. So I got really fed up and I chose to not really write about my interview experience. I still do not want to write about it. So I'm just uploading this live video. So I'm not here to give any advice or tips or sure short methods of cracking it or anything because वो उस तरह का ज्ञान बहुत बंटता है और बट रहा होगा अभी. I'm just here to simply tell what I did, how my experience was, and basically a video transcript because I feel lazy writing about it. Apologies for that. But I hope you understand and hope you try to learn something from this. Actually, don't learn something from it. It's just to say that interview is a very unique experience. जो आपके साथ होगा वहाँ पे उस मोमेंट पे उस आधे घंटे वो दुनिया में कभी किसी के साथ नहीं होने वाला दोबारा. उसी सिचुएशन में उसी मोमेंट में क्या आप आंसर करते हो, क्या आपको क्वेश्चन आता है, क्या उसका फीडबैक आपको उसी टाइम मिलता है और क्या आप सोच रहे हो, वो वापस कभी नहीं आने वाला. तो basically I'll start with a little prologue to the interview story because yeah, so once upon a time in December 2018, 2018 the results for mains came out. दिसंबर ही था शायद, हाँ. तो and I started preparing for the interview after like we didn't celebrate or anything, but हाँ ये था कि अब इंटरव्यू फेब में होगा लिखा हुआ था नोटिफिकेशन में. आई थिंक 4th Feb was announced in the notification, though the date changed later, I think. Also apologies if some details are found to be erratic because 2 साल पहले की बात याद कर रहा हूँ मैं और आज काफी दिन बाद सोच रहा हूँ इस बारे में. तो हाँ माफ कीजिएगा अगर थोड़ी डिटेल्स मैच नहीं होती, लेकिन आई विल ट्राई माय बेस्ट टू रिकॉल एवरी सिंगल थिंग दैट आई कैन. And keeping in mind it's just a story, it's a real story for sure, but it's not a gyan ka lecture or tips or advice or anything, because I think if you've cleared prelims and mains, even if you haven't, the youth of India is I think we do not need to spoon feed you people. You know what you want in life, and you basically, if you have even cleared pre and mains, I don't want to shepherd you or promote monoculture जो कोचिंग इंस्टीट्यूट्स करते हैं कि आपको तो ऐसा ही दिखना है और ऐसा ही बोलना है और इस क्वेश्चन का जवाब ऐसे ही देना है, वो मैं नहीं करने वाला. हाँ, तो दिसंबर में 2018 रिजल्ट आने के बाद आई स्टार्टेड वर्किंग ऑन
माय डैफ और समथिंग जो उन्होंने स्टार्ट किया था कि जो हमने मेन से पहले भी भर दिया था, क्योंकि उस टाइम पे दोनों अपनी चॉइसेस वगैरह वो बाद में भरनी होती है, लेकिन मेन डैफ पहले भरना होता था। तो वो जो भी मैं लिख चुका था डैफ में, वो सब एनालिसिस करना उसका और अपने पास्ट के बारे में जानना, मैं कहाँ से आता हूँ, कहाँ मैं पैदा हुआ, ये सब, किधर जगह में रहा, उनकी प्रॉब्लम्स क्या थी, लोकल प्रॉब्लम्स क्या थी, about a little about my parents' history, about the history of my schools or my college or whatever I've done in life till now. It was just about knowing myself, or फिर a lot of current affairs, क्योंकि that is really important. Uh, and watching Rajya Sabha TV regularly was basically my preparation. I did not uh, uh, actually completely leave doing mocks, etc. I continued with that also a little bit, but primarily जो prep थी वो अपने DAF के ऊपर थी, और I decided कि mock interviews देने जाऊंगा in like the last week of January, क्योंकि उसके बाद पता चल जाएगा डेट्स वगैरह। उससे पहले ही, हाँ, इंटरव्यू के डेट्स मिड जैन या 20 जैन के आसपास, ऐसे उस हफ्ते में, थर्ड या सेकंड थर्ड हफ्ते में आ गई थी। तो या एंड करंट अफेयर्स और डैफ की प्रेप एटसेट्रा। फिर जो एग्जैक्ट पॉइंट था टू स्टार्ट गिविंग मॉक इंटरव्यूज वाज इन द एंड ऑफ जनवरी, because I got to know that मेरा इंटरव्यू was on 19th February, which was the early phases of the interview. जो शुरू के 2 हफ्ते, एक हफ्ता था, उसी में ही मेरा इंटरव्यू था। 19th Feb को 9 o'clock was what the e-summons जिसे कहते हैं, e-summons पे ये लिखा था, एडमिट कार्ड होता है जो बेसिकली इंटरव्यू का। तो मॉक इंटरव्यूज मैंने डिसाइड किया कि जिनसे मैंने मेंस लिया है वही मैं रिपीट कर दूंगा, बिकॉज आई डिडंट वांट टू इंटरैक्ट और गेट टू नो अदर कोचिंग इंस्टीट्यूट्स एंड कंफ्यूज माई सेल्फ। तो नॉट टेकिंग नेम्स, एक्चुअली टेकिंग नेम्स, क्योंकि कोचिंग इंस्टीट्यूट अपने प्रमोशन तो करते ही हैं फालतू में, हर जगह लिखा होता है, एंड यू गाइज मस्ट बी फॉलोइंग अ सर्टेन वेब सीरीज विच इज बीइंग फेमस। मतलब अभी काफी लोग देख रहे होंगे, और हर जगह उधर कोचिंग इंस्टीट्यूट्स के ही नाम हर जगह है, तो इट्स ओनली फेयर टू एक्चुअली, इवन इन क्रिटिसिज्म दे शुड बी नेम्ड। सो आई स्टार्ट माय mock interviews with the Raos, and then moved on to Chanakya and GS Score और Vision। तो बस ये 4 थे। लेटर ऑन आई गॉट टू नो कि ASG वगैरह का डैफ एनालिसिस बहुत अच्छा होता है, एटसेट्रा एटसेट्रा। आई डिडंट नो बिकॉज आई डिडंट हैव अ सर्कल ऑफ पीपल हु वर गिविंग दीज इंटरव्यूज, एटसेट्रा एटसेट्रा। तो I basically was ignorant of a lot of details. I did not have information overload कि कहाँ से डैफ, मुझे पता भी नहीं था कि डैफ एनालिसिस कुछ होता भी है, क्योंकि विजन में एक बार उन्होंने कराया, और उनके पैकेजेस ऐसे होते हैं, 1,000 रुपए दो तो इतना, 2,500 दो तो डैफ एनालिसिस प्लस हाफ, मतलब हाफ प्रेप विद फैकल्टी इंटरव्यू, और फिर फुल प्रेप विद लाइक द पैनलिस्ट्स। ये सब मुझे ज़्यादा पता नहीं था, पर एक्सप्लोरिंग एट दैट टाइम आई गॉट टू नो कि कैसे इन 4 इंस्टीट्यूट्स में अलग अलग पैकेजेस थे बेसिकली। तो I started with Rouse, and the first excitement was actually to just talk to people, क्योंकि 1.5-2 साल पढ़ने के बाद और एग्जाम देने में मैं इतना अंडरग्राउंड था और इतना आउट ऑफ टच था कि आई जस्ट वांटेड टू गो आउट एंड बेसिकली मीट एंड टॉक टू पीपल। इंटरव्यू में क्या हुआ, गाली दिया, ये हुआ, बेकार बोल रहे हो तुम प्रिपेयर्ड नहीं हुई है, एटसेट्रा एटसेट्रा। आई वाज रेडी टू हियर दैट, बट आई जस्ट वांटेड टू टॉक टू सम पीपल desperately. So I went out, and I still remember I think the last week of Jan, I went to Rouse, and it was a decent interview, but it basically showed how thoroughly unprepared I was, which they, all the 3 panelists who were sitting there, ex-IPS, ex-IS officers, whoever, I don't remember their names, but they basically exposed how
ill prepared I was, but I was just very glad to just meet them. So I was like, yes, I was grinning all the time. कि हाँ सर सही बोल रहे हो, and etc. I'll take into account and after the feedback session basically, and I was just happy to talk to people, and I went back home and re-saw my interview through that वो pen drive में डाल के देते हैं, तो all the humming and hawing which I still do, ये मैं अभी भी कर रहा हूँ, वो मैं इंटरव्यू में भी कर रहा था और मैंने सारे इंटरव्यूज में ये किया होगा, because that's how I basically think. And they would all of the interviews would just say कि नहीं 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 ये सब नहीं करना, humming and hawing shows, you are not confident and you have no clarity of thought, etc etc. But I tried to do that, but अब जो नहीं चेंज होता वो नहीं चेंज होता is fine. That's the thing I want to tell कि अब फाइनल डेज में एक महीने में आप अपनी पर्सनालिटी तो चेंज नहीं कर सकते हो, बट द वे यू टॉक इज द वे यू एक्सप्रेस योर सेल्फ. इट्स मैं अपने हाथ बहुत हिलाता था और हर इंटरव्यू में मुझे यही फीडबैक मिला कि आप हाथ बहुत ज्यादा हिला रहे हो. इनफैक्ट इन आफ्टर हाउस आई वेंट टू विजन फॉर द डैफ एनालिसिस और फैकल्टी ने तो बोला कि you've written that you did theater in college and it shows that you did theater, because आप अभी भी डायरेक्टर की तरह ही बोल रहे हो, ये हाथ इतने ज्यादा हिला रहे हो आप कि ब्रेकिंग बैड और जीओटी. अरे ब्रेकिंग बैड ब्रो ऑब्वियसली. तो apologies, I won't be taking questions on the chat panel. That is very distracting. Please guys. ओके हाँ, तो डैफ एनालिसिस और फैकल्टी से जो फीडबैक मिलता है थ्रू मॉक इंटरव्यूज, दैट इज सॉर्ट ऑफ हेल्पफुल, बट यू शुड टेक इट विद पिंच ऑफ सॉल्ट कि हाँ ठीक है, कुछ कंस्ट्रक्टिव एडवाइस है और कुछ इज इररिलेवेंट टू यू, बिकॉज द वे यू एक्सप्रेस योर सेल्फ हैज बिन द वे यू एक्सप्रेस योर सेल्फ सिंस अ लॉन्ग टाइम, एंड दिस इज, if you just be yourself in the interview, that would, according to me, would be better. It's not a tip, it's just how I feel. And then I went to Chanakya IAS और वहाँ था JP सिद्धार्थ होटल, JP सिद्धार्थ शायद यही नाम था. तो वहाँ मैं गया और वहाँ होटल काफी सही था और उसमें बीटल्स के गाने चल रहे थे पीछे, तो थोड़ा रिलैक्स और वो माहौल बन गया था. एंड द इंटरव्यू वाज बेसिकली ऑन माय प्रेफरेंस व्हिच वाज इंडियन फॉरेन सर्विस, एंड मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस आस्क्ड वर जियोपॉलिटिकल क्वेश्चंस एटसेट्रा व्हिच आई लव्ड आंसरिंग. तो इट वाज अ फन इंटरव्यू, आई लाइक्ड इट, बट इट डिडंट take into account the generalist approach, because final interview में आपकी वो list of preferences आती नहीं है बोर्ड के पास उस टाइम तक. अभी मैंने सुना है शायद आ रही है इस साल, according to the people who've contacted me. Anyways, that was basically based on IFS, and the last interview which I took was GS Score, which was in fact a terribly managed interview. But पता नहीं, on that specific day it was really frustrating, because 3-4 घंटे बिठाए रखा और कोई वेटिंग लिस्ट वगैरह वो चल रही थी, बहुत लेट आए थे पैनलिस्ट, and it actually exposed a new facet regarding coaching institutes to me, कि ये लोग बाल की खाल बहुत ज्यादा उतारते हैं, कि आपका डैफ ही ऐसे एक्सरे करेंगे कि इतना पिन पॉइंटेड क्वेश्चंस भी पूछेंगे कि यू वुडंट रियली sort of feel that they are actually being reasonable about it. For example, अब शुरू में आपका लिखा होता है सिट nationality Indian, then they would just ask you कि अरे according to you, how can you be a citizen of India, what does the citizen of India, being a citizen of India mean, etc etc, which is okay, but just saying that कि DAF में ये लिखा है और ये आपसे क्वेश्चन स्पेसिफिकली इससे भी पूछ सकते हैं is a long shot, but it's good कि आपको इतना scrutiny के लिए prepare कर रहे हैं वो. However, the questions that they asked on that particular day was very, sort of, it was kind of a really bad interview, because they asked me कि you've written in your DAF your permanent address is of Kurukshetra, where my grandparents stay. तो उन्होंने बोला कुरुक्षेत्र से तो हमें एक ही बात याद आती है जो है महाभारत. तो महाभारत में आपका फेवरेट कैरेक्टर कौन सा था?
तो मैंने सोचा कि एक्चुअली माय फेवरेट कैरेक्टर वाज कृष्णा द्वैपायना व्हिच इज अनदर नेम ऑफ वेद व्यास, पर मुझे लगा कि ये बोलूंगा तो उन्हें लगेगा ये किसके बारे में बात कर रहा है, उन्हें पहले समझाना पड़ेगा कि ये है कौन। तो मैंने बहुत ही कॉमन सेंस वाला और कॉमन नॉलेज वाला आंसर दिया कि ऑल ऑफ माय कैरेक्टर्स आर फेवरेट बट कर्ण इज specifically dear to me because he has a very interesting backstory and has a very great arc, if you can say, in Marvel universe और DC fans जो भी होंगे। तो कर्ण का आर्क बहुत इंटरेस्टिंग है। तो उन्होंने बोला बट व्हाई ही चोज द रॉन्ग साइड, एंड आई सेड नो सर ही डिडंट चूज द रॉन्ग साइड। So they said no, he was with Kauravas. Kauravas were evil. Then I said, sir, Kauravas were not exactly evil. It's like, how do you say that? I said, sir, Ramayana is different from Mahabharata because Ramayana is about good versus evil exactly, but Mahabharata is more about the gray areas, more about dharma and वही त्रेता और द्वापर युग में फर्क, और उसके बाद जो corruption of the mind and the dharma, etc. It's not really about good versus evil, but rather the concept of the dharma. And they basically got offended, and the entire interview was based on that only. Like, how can you say Pandavas were good, and how can you say that Pandavas were bad and Kauravas were good? And I didn't say that. I didn't say that any of that. I basically said it's about the gray areas. So the interview was very like it was stretched to the point of insanity. And और feedback उन्होंने ये दिया कि Vikram, we understand your point of view, but you cannot question established wisdom. If you go to the interview, you have to accept that Karan was an evil guy, which I wasn't ready to accept, because if you really read the text, it's not really what you saw on the TV, what TV series wali Mahabharat nahi hai exactly, but you can't help it if the board member has that opinion. Anyways, I was not in a mood for standoff, or I didn't do that. I just kept smiling and accepted their opinion, etc. But I stood my ground, and because I genuinely believed that that's the subtlety between these two texts which should be told about. Anyways, that was an experience that was very kind of demoralizing, but then also a learning experience. हर कोई बोलता है कि either you succeed or you have learnings, etc. So that was my learning कि do not question established wisdom, at least for the time being, at least for 30 minutes. उसके बाद जो तुम चाहो वो करना, पर I personally did not really take that into account, because the final interview which I was called for again by Vision IS was the most amazing interview I had amongst the mock interviews, because it had very distinguished panelists. Half of them came on Rajya Sabha TV, and the moment I entered the hall, I was so starstruck कि आपको तो मैं टीवी पे देखता रहा हूँ, आप मेरा इंटरव्यू ले रहे हो. But I didn't say that directly. I said that afterwards, after the interview, during the feedback session. So the final interview was, तो Vision वाला जो था was quite, kind of balanced, and had good panelists who actually sort of inspired me to do well finally in the interview, because it was just 10 days before the final interview. So this was basically the prologue. The interview process is checkered by these mock interviews that coaching institutes do, and they sort of promote monoculture ki for you have to look, talk, and behave in a specific way to get selected. So I went through that process. I took some points that were relevant to me, and I worked on them, and mostly then I just rejected the other advice which they had for me. And on 19th February, just 1 week before, I went to see UPSC. I'd never seen UPSC in my life, to just see कि कहाँ पे है और कैसा लगता है, etc. I also went to see their museum because I am a history graduate, और मुझे लगा कि शायद वो
हिस्ट्री, यूपीएससी की हिस्ट्री से क्वेश्चन पूछ सकें, पूछ पूछ लें, क्या पता। तो जो गेट नंबर, जो द गेट दैट इज ऑपोजिट टू देयर काउंटर सी का स्ट्रीट, आई वेंट एंड चेकड आउट देयर म्यूजियम, और काफ़ी इंफॉर्मेशन थी उसमें। आई टुक नोट ऑफ इट, बट आई डाउट कि अंदर भी किसी को यूपीएससी की हिस्ट्री का इतना पता हो। तो मुझे भी उस टाइम 1-2 दिन के लिए पता था, एक हफ्ते के लिए, पर फिर मैं भूल गया, जैसा कि हिस्ट्री से के साथ होता है। तो on that final day, 19th Feb, I woke up at 7:30, the usual, and I had like namak ka parantha in the breakfast. I think it's very important to even these little things are very important. When you wake up, how much do you like give time to yourself? And कि आप उस दिन खाते क्या हो, आप उस दिन पीते क्या हो, और आपका मेंटल स्टेट क्या है. इट शुड बी एग्जैक्टली व्हाट इट हैज़ बीन फॉर द पास्ट सो मेनी डेज. नथिंग शुड डिसरप्ट इट. तो 7:30 I woke up, I meditated for a while, ate my breakfast, and 8:30, 8:45 I was at the gate. 9 o'clock reporting time था. उधर भीड़ लगी हुई थी. And my father and I went there. My father took leave from Kashmir and came back uh, to be with me and to, just be there for the interview finally, because he wasn't there for prelims and mains. So me and my father actually have gone together to give so many एंट्रेंस एग्जाम्स ड्यूरिंग स्कूल की, और हर बार मैं एंट्रेंस एग्जाम फेल हो जाता था. तो इस बार भी मुझे लग रहा था, यार मैं पापा के साथ जा रहा हूँ तो पता नहीं क्या होगा. तो आई जस्ट बट आई हैड अ फीलिंग दैट आई वाज वेरी मोटिवेटेड बिकॉज ही वाज विद मी, एंड ही केप्ट टेलिंग मी कि नहीं, तुम अपना म्यूजिक सुनो, बिकॉज एवरी टाइम बिफोर एन एग्जाम और prelims, mains, even interview, I just have to listen to music to get pumped up. So my dad kept telling me, you should just focus and listen to your music. Just listen to your music. And it sort of was cute because he really wanted me in the perfect mental state. So I heard some music, or I was at the gate. I entered the UPSC, legit UPSC premises for the first time, and it is quite an overwhelming experience because it is so well arranged. Like, it is so procedural and everything. Every person who's standing inside that premises knows why he's here, and from the guard to the final, like the maybe the secretary or whoever, all the panelists or the board members are very like, they are at the right place at the right time, basically. So, and it exudes that aura, which जो आप इतने दिन से सोचता है कि यूपीएससी है, तो यूपीएससी सच में काफी काफी बढ़िया ऑर्गेनाइज है, काफी बढ़िया गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन है. तो 9 o'clock I entered. 9:30 we had to be seated in that main hall जो बीच में होता है, सर्कुलर, और बीच में आपको रखते हैं, और वहाँ पे आपके सारे और डॉक्यूमेंट्स एक्सेट्रा वेरीफाई कराते हैं. तो आप अपने डॉक्यूमेंट्स तैयार रखिएगा, अपनी डिग्रीज और बर्थ सर्टिफिकेट और 10th का जो मार्कशीट एक्सेट्रा. It took 10 minutes for me to get my documents verified. और फिर जब वो आया तो उन्होंने एक अंडरटेकिंग दी कि because I had just graduated in 2017 or 2019 when I was giving the exam, my DU degree wasn't really out yet. तो मैंने प्रोविजनल डिग्री दी थी, तो उन्होंने प्रोविजनल का लिख लिया, और फिर जो फॉर्म था भर दिया. वो अंडरटेकिंग में लिखा है कि विद इन 15, I think I'll have to take a few questions. It's going really crazy. Arey, Jasru, bro. Okay, no, I won't. Okay, let's not get distracted. Yes, I was in the center of that hall, and that undertaking came, and that basically screwed my entire brain because it said कि आपने अगर 14 days में वो डिग्री नहीं दी,
DU जो भी आपकी ग्रेजुएशन डिग्री है, तो योर कैंडिडेचर वुड बी कैंसल्ड. It was written that your candidature is provisional. You have to produce it within 14 days to otherwise it will be cancelled. So it was an understood procedure for everyone else who was appearing for the second, third time. But for me, being the first time and not interacting with any other aspirants or candidates for the past 1.5 years, I was completely shocked to see that piece of paper, because I was very particular about paperwork. In government, documentation is the key. It is the most important thing. So I thought कि ये तो मेरा candidature cancel हो जाएगा, because the entire due bureaucracy went through my mind कि अब मैं जाऊंगा, डिग्री कब लूंगा, कब इन्हें दिखाऊंगा, और मैं तो कर ही नहीं पाऊंगा 14 दिन में इनको प्रोड्यूस. तो मैंने उनसे पूछा कि सर ये तो आप समझते हो ये मेरे तरह बहुत सारे कैंडिडेट्स होंगे, वो क्या करते होंगे. तो वो कहते ये तो हर साल होता है, चिल करो आप बस काउंटर सी में ये एप्लीकेशन जमा कर देना कि आप प्रोविजनल डिग्री दे चुके हो और फाइनल डिग्री जब आएगी आप दिखा दोगे. तो मैंने बोला ठीक है. तो पर लेकिन आई डिड नॉट ट्रस्ट द पर्सन, बिकॉज ही वाज लाइक अरे ये तो कुछ नहीं होता. एंड आई वाज लाइक ये तो पेपर वर्क है भाई, ऑफिशियल यूपीएससी के अंदर आपने मुझे डॉक्यूमेंट दिया है, तो कुछ तो मतलब होगा इसका. तो कहते ये तो अंडरस्टूड, ये होता है, हर साल होता है, पर आप आराम कीजिए, आप बस ये इंटरव्यू पे फोकस कीजिए. एंड दिस वाज द ट्रिगर पॉइंट, बिकॉज my interview was the first interview of that day. Our boards were announced at that time, or I got M. Satyavati ma'am's board. But the entire information regarding the interview or what my board was or how my journey has been till now was completely irrelevant to me, because I kept thinking about that provisional certificate. Or interview मेरे लिए, the positive thing was कि interview मेरे लिए थोड़ा irrelevant सा हो गया कि फायदा ही क्या इसका जब मेरा कैंडिडेचर ही ऐसा होगा. पर that was just my mind trying to play games with me, which is okay, but I've sort of completely zoned out, because the interview seemed like the interview seemed provisional to me then. और बाकी मेरे साथ एक और बंदा था शायद जिसके पास ये सेम सर्टिफिकेट आया था, बट ही वाज क्वाइट रिलैक्स. सो आई वाज लाइक ठीक है, शायद हर साल यही होता है, और होता भी है, बाद में पता भी चला. और तो at 10 o'clock sharp my interview, the first day of the interview, the first interview of the day, sorry, was mine. I went, I sat, वो बेंच होता है बाहर, और उस पे जैसी बेल बजती है बाहर आते हैं वो पियून, वो बताते हैं कि आपको बुला रहे हैं. तो I entered. The moment I entered, there was a sofa here. There was a round table on the extreme right, a couple of sofas here, a couple of plants here, a couple of paintings there. Anyways, round table, 5 people, 1 chair empty at this corner, symmetrical, because if I sit, there'll be 6 people around the table and it'll be like a aesthetically symmetrical. नहीं वैसे भी अच्छा ठीक है. तो I sat down. I didn't know. I just entered and like, may I come in? ये तो basic courtesy जो हर कोई करता ही है. May I come in? I was like, please. And then I stood next to the chair. They said, you may please be seated. I sat down. Then Satyavati ma'am started. She was the chairperson. She said, Vikram, I see that your DAF has a lot of references to a lot of different states. Where do you actually belong to? And then I said that I started with, like, I was born in Firozpur, Punjab, but I did my schooling, primary schooling in South, and then she stopped me and she's like, where did you study in South? I said Hyderabad and Ooty. Then she said, there's a lot of hullabaloo happening around the Finance Commission की report recently. So at that point of time, encasing के अंदर जो panel बना था, it didn't release its report. अभी आई है report तो कुछ महीने पहले ही. But उस time वो चल रहा था कि South states were arguing कि the population, कौन से time frame का population should be decided for this
evaluation of the provisions of the commission. तो उन्होंने बोला कि अच्छा तो इसका डिबेट क्या है, तो मैंने बताया कि हाँ नॉर्थ, क्योंकि states that have fared well in population control etc will be penalized for no reason etc. तो ये चला, and then she's like, why are they creating such a ruckus then? And then I said, ma'am, it's not a ruckus that south states are asking for their demands, it's just they are showing some concern. And then she's like, okay, so what do you think? And then I just gave the politically correct answer. I said the results of the report are not, I mean the final report is not out yet, and encasing panel has to meet a few more times, and I think they are taking into account that particular grievance of all these states. And then she's like, okay. And then she talked about the my hobby was about regarding I had mentioned some filmmaking etc that I did in college. She asked me about that, I answered simply, and then the buck moved on to the next panelist, who was sitting just towards her right, and he said that, Vikram, uh, you come from an army background, and I don't think you'll be able to adjust in this civil, uh, mainstream of the civil society here with the civil services. So because he said, I have many friends from the army who always keep criticizing कि civil अलग होता है, army अलग होता है, इसमें कैसे इतना army में इतना discipline होता है, हमारे कैंट्स इतने सुंदर होते हैं, तुम इतना खराब रखते हो शहर को. And I said, no sir, that's not what we really discuss all the time. So he's like, yeah, I know. I very well know. I have many army friends, etc. So if you get a cadre of a state which has absolutely no army presence, for example, agar you get Kerala cadre, how will you manage there? So I said, sir, and then he said, ki Kerala cadre, and I assume you must have opted for IAS as the first preference. And then I said, no, sir, I have opted for IFS. So he said, and at that point of time, I realized everyone started looking at each other, and then I realized कि उनके पास preferences है ही नहीं, list of preferences है ही नहीं, उन्हें पता ही नहीं मेरी service preference क्या है. तो then he was surprised, oh IFS, तुमको तो मैं लिबिया भेजूंगा. तो मैंने बोला, sir, okay, that will also be a challenge and adventure for me. And before that, talking about cinema to Satyavati ma'am, I had referred to my interest in Adventures of Tintin. And then when the second panelist, he said कि तुमको तो मैं लिबिया भेजूंगा, I said that will also be an adventure sir. And then he said अगर adventure ही चाहिए तो आप अपने पापा की तरह आर्मी में ही जाओ. तो मैंने बोला, मैं बोलने वाला था कि chairperson herself said I think he only likes soft adventures, and everyone started laughing, and even I started laughing. तो हंसने के बाद वो सीरियस क्वेश्चन पे आया. उसने बोला कि अच्छा, तुमने लिखा है अपने ड्राफ्ट में कि तुमने वाटर स्पोर्ट्स कोर्स किया है पोंग डैम पे. तो मैंने बोला यस सर किया है. तो कहते हैं कि पोंग डैम के साथ ना ऐसा कुछ होने वाला है कि चाइना कुछ कर दे और पोंग डैम को बहुत नुकसान होगा. इट विल बी डेवास्टेटेड. व्हाट इज दैट पर्टिकुलर थिंग दैट चाइना कैन डू to that dam? And then I got a little confused because Pong Dam is built on Beas River. China, if can do anything. I thought he got it confused with Satluj, which originates from there. तो मैंने बोला sir, I'm not aware. And then I said, but if you're talking about Pong Dam, it is built on. Okay, please take my question. Please take my question. Sorry, I cannot really find your particular question, Hemant. Later, pakka later. So I said Pong Dam is on Beas River. I am not sure what China can do about that. So he sort of realized that he mistook. I think that he realized that Satluj और Beas का confusion जो हो गया उन्हें. And then I said nothing. I looked at him. He kept looking at me, and he just said, "Okay, just then let's move on to the next question." And then he spoke
about this particular two vegetables. He said, Vikram, one famous medical journal has come out, uh, according to which दो सब्जियां नहीं खा सकते ब्यूरोक्रेट्स, और नहीं खा सकते मतलब नहीं खानी चाहिए bureaucrats or babies को, like infants and bureaucrats should not eat this particular civil servant bureaucrats should not eat these two particular vegetables. This famous journal just came out with the report. Tell me about the journal and tell me about those two vegetables. And I was like, sir, I'm sorry, I'm not aware. And then he said, are you sure? It's very prominent. I mean, and then he started looking at all of them, and they started looking at me as if कि सबको ही पता है वो दो सब्जी कौन सी है और मुझे नहीं पता. तो मैंने बोला, I'm really sorry, sir, but I'm not aware of this report. And then he's like, okay. कट टू घर जाके जब मैंने चेक किया गूगल पे, ऐसा कुछ मुझे आज तक नहीं मिला. तो पता नहीं वो सब्जियां कौन सी हैं. अगर आपको पता है तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट कीजिए कि वो दो सब्जी कौन सी है. Anyways, we moved on to the next board member, which was, so दो क्वेश्चन चेयरपर्सन के हो गए, दो क्वेश्चन उसके जो राइट बैठा था उसके हो गए. अब उसके जो राइट बैठे थे एक सर, काफी ज्यादा, he was very supportive throughout because he kept nodding whatever I said. There are always these people with like the good cops and the bad cops in every board, I think. Also, I didn't know about the chairperson, how he or she determines the dynamics of the board, because later on in Labasna I got to know कि अगर एक पर्टिकुलर बोर्ड मिल जाता है तो एक पर्टिकुलर सर्विस के लिए वो बेनिफिशियल या फिर डिसएडवांटेजेस होता है एटसेट्रा. वो पॉलिटिक्स मुझे कुछ नहीं पता था, अभी भी कुछ खास पता नहीं है. पर हाँ, तो ये जो सर थे उन्होंने पूछा कि विक्रम ग्रेवाल तुसी पंजाबी हो? तो मैंने बोला, नो सर, I've grown up amongst Punjabis but I'm not exactly a पंजाबी. तो कि पंजाबी तो आती है ना? तो मैंने बोला, यस सर आती तो है, पर बोलता इतनी अच्छी नहीं, समझ लेता हूँ अच्छे से. तो उन्होंने बोला, चल फिर अब मैं इंटरव्यू पंजाबी में लूंगा तुम्हारा, ठीक. तो मैंने बोला, ठीक है सर, मैं समझ लूंगा, मैं आंसर इंग्लिश हिंदी में करूंगा. तो अब उन्होंने वो शुरू हो गए कि हाँ, आर्मी वालों को तो काफी ज्यादा रीजन्स में घूमने को मिलता है, तो तुम्हें काफी लैंग्वेजेस का होगा ऐसा. मेरे को भी काफी है कि मुझे ये लैंग्वेज आती है वो. तो वो अपने ही ट्रिप पे चले गए और काफी ज्यादा 5-6 मिनट तक बोल गए वो. पर वो मैं नॉट करता रहा कि यस सर, यस सर, यस सर, हाँ आप सही बोल रहे हो, आप सही बोल रहे हो, क्योंकि इट वाज एक्चुअली रिलेटेबल फॉर मी. But the other board members, especially the chairperson, she was a little perturbed कि ये क्वेश्चन कब पूछेंगे. तो उन्होंने बोला, उन्होंने कुछ इशारा किया, उन्हें पता नहीं कि उन्होंने उसकी तरफ देखा और सर ने उनकी तरफ देखा. तो सर ने बोला, अच्छा ठीक है, सॉरी मैं क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, व्हाट अकॉर्डिंग टू यू इज योर बिगेस्ट स्ट्रेंथ. तो जो पहले क्वेश्चन का टाइम था वो सर खा चुके थे, एक क्वेश्चन उनका बचा था शायद, इफ वी गो बाय द लॉजिक कि हर कोई बोर्ड मेंबर दो क्वेश्चन पूछता है. Also, I also realized how, it seemed like what in Delhi University we call positive introduction. जब कोई फर्स्ट ईयर बच्चा आता है तो लोग उसे सीनियर सराउंड करके जो क्वेश्चंस आप पूछते हो उससे वो आपके अपने बैचमेट्स में भी रिफ्लेक्ट करता है कि वो आपके बैचमेट्स भी आपको जज कर रहे होते हैं उस क्वेश्चन के लिए. तो वो भी इंटरव्यू बोर्ड्स में मुझे लगता है होता है, क्योंकि इट्स ह्यूमन टेंडेंसी कि आप जिस तरह के क्वेश्चन उससे पूछोगे वो आप पर भी रिफ्लेक्ट होगा. तो आई थिंक बोर्ड मेंबर्स आर आल्सो कॉन्शियस कि वो क्या क्वेश्चन किससे पूछ रहे हैं. एनीवेज, तो सर ने पूछा, अकॉर्डिंग टू यू व्हाट इज योर बिगेस्ट स्ट्रेंथ. तो मैं प्रिपेयर करके आया था, पर आई थॉट कि सर, मैंने पोलाइटली बोला, सर आई थिंक आई एम रियली गुड एट क्रिएटिव राइटिंग. आई डोंट थिंक इट्स माई बिगेस्ट स्ट्रेंथ, बट आई एम वर्किंग ऑन इट टू मेक इट माई बिगेस्ट स्ट्रेंथ. So creative writing. So he's like, okay, what do you write? In which language do you write? I said, sir, Hindi and little bit of Urdu and English primarily. तो कहता, और पंजाबी? तो मैं बोला, सर पंजाबी इतनी तो नहीं आती. तो it sort of, he gave it a full circle and then he laughed and ended it, and that was, I loved that, sir, basically. Also, yes, when they realized my preference was IFS. The moment I said I had opted for IFS, there was this person sitting to my right who was diametrically opposite to the person who had asked me about
Pong Dam and that vegetable. तो उन्होंने डायरेक्टली एक दूसरे को देखा था, तो आई अज्यूम्ड कि ये सर आईएफएस में थे, पता नहीं कौन थे, पर शायद ये आईएफएस में ही होंगे, क्योंकि एकदम से सबने उनकी तरफ देखा था जब मैंने बोला. And he was very like he took the last opportunity to ask me question, because अब technically बारी उनकी थी question पूछने की, if we are going by passing the parcel, but I don't know if we were. तो सर ने बोला, सर ने, एक मैम बैठी थी उनके लिए, basically 2 women were there and 3 men were there. तो सत्यावती मैम and the other ma'am was sitting just towards her left. तो सर ने बोला कि आप पहले पूछ लो. तो ma'am asked me about she asked me about history. You switched from science to history. How was that experience? And according to you, what is history? And in that answer, I quoted a lot of people. I quoted from Romila Thapar to Devdutt Patnaik to, मतलब मैं अपने पर्सपेक्टिव से बता देता, लेकिन क्योंकि डीयू में आंसर लिखने की आदत ऐसी थी कि हिस्टोरियंस और स्कॉलर्स को कोट करो कि अपना ओपिनियन बताते हुए उनका ओपिनियन बता दो, तो मैंने आंसर वैसा ही दे दिया. तो मैम ने एक्सेप्ट कर लिया, और मैम ने फिर बोला कि यू नो योर कॉलेज इज क्वाइट प्रोमिनेंट, इट इज ऑलवेज इन द न्यूज, तो आप अपने प्रोटेस्ट कल्चर के बारे में बताओ कॉलेज में. तो मैंने बताया कि, और उन्होंने, शी ऑल्सो सेड दैट यू नो what is the situation of gender studies in your college. So I spoke about there's a gender study cell in my college, and women were initially not admitted in college in back when it was established, but 1960s 1970s mein they started admitting, and now we have, like, my batch had 65-70% female students, and even the residence has increased the number of hostels they give to female students. However, there is still a systemic, I didn't say misogyny, but I did say that there is definitely discrimination, and a lot of protests through a lot of organizations happen outside college, inside college, and it's a very vibrant protest culture, because at that point of time autonomy was also an issue, and a lot of other issues were there. The curfew timings for girls and boys being different, for boys not even existing sometimes, and trying to impose them, and तो ये सब politics, college politics पे आंसर था. And in the middle of it I realized how I was basically highlighting the entire protest chronology of the Delhi University, and specifically my college. But then she's like, were you part of those protests? So मैंने बोला कि ma'am, I wasn't involved in such a huge way, but I really supported their cause, and through attending events by Gender Studies Cell, etc., having debates in college, and there were other societies, even in the theater society I was part of. We kept on having these discussions about the college's provision and policy regarding gender and gender representation. So it was a long answer, but then all of them were sort of in agreement, and then that shifted the buck to finally this sir who was presumably in IFS, I think. So he said, Vikram, you have chosen IFS. And then I said, yes, sir. And then he said, tell me something about marine archaeology. And then that was like, I was completely dumbfounded कि मुझे जैसे उन्होंने बोला you have chosen IFS, I was like, अब कोई आ रहा है foreign policy question आ रहा है, tell me about marine archaeology. And then I said, sir, तो मैंने National Geographic का coverage, I still have that issue. It was a Titanic का 100 years of submergence का issue, which was the closest I had ever read about marine archaeology, apart from a little bit of archaeology जो starting में उपिंदर सिंह का chapter है on literary and archaeology sources. So I said, sir,
I have no idea about this, but if you want to hear something about the Titanic excavation and that part of archaeology, I can tell you something about that. And then he smiled and said, "Let's not go there then." And then I said, "Yes, sir, let's not." So he spoke about, you know, Vikram, you have quoted a lot of people, historians, scholars, writers in the course of the interview. Now I would that has really provoked me, and that sort of took me aback, because provoke sounded like a negative word, but he's like in a positive way. It has provoked me in a positive way. Now I'll tell you a quote. You tell me, what does it mean to you? So I said, yes, sir. Okay. He said, history, those people who do not learn from history tend to repeat it. And then I said, yes, sir, I know. Edmund Burke has said it. And then suddenly all the board members were like, ये क्या है, इसको तो पता है किसने बोली है. Then the person who had asked the question, he said, कि ये तो George Santana ने बोली है वैसे. Like, are you sure? Like, yes, sir, I wrote it in my essay also. Edmund Burke has said it. और घर जा कट टू मैं घर जब गया था, तो वहां पे गूगल किया तो पता चला कि दोनों ने ही ऑलमोस्ट सिमिलर कोट्स बोली है. देयर आर अ लॉट ऑफ कोट्स, स्पेशली विच आर एट्रीब्यूटेड टू ऑस्कर वाइल्ड और पीपल लाइक दैट, कि जो बाकी किसी ने भी सेम कोट की होती है, पर it's very similar, but the wording is changed. So Santana and Edmund Burke almost had the same quote. तो क्योंकि इनिशियली इन द इंटरव्यू एवरीवन वाज लाइक, इसको तो पता है कि इसकी बर्क ने बोली है, और बोर्ड मेंबर कह रहा है कि सेंटाना ने बोली है. तो जैसे ही मैंने बोला मैंने एसए में भी लिखा था, तो सॉर्ट ऑफ एवरीवन वाज लाइक, हाँ इसने एसए में लिखा होगा और ये प्रिपेयर कर रहा है, तो शायद ये सही बोल रहा होगा और सेंटाना ने नहीं बोली होगी कोड. That gave me a different kind of confidence, but I'm not sure how it helped me. Anyways, so I kept telling him, this is what it means, that if we do not learn from the past, we are doomed to repeat it. We commit the same mistakes. History is a subject that provides us an avenue to actually look at our mistakes in a different perspective and work on them to not commit them again. So he's like, can you give an example of a mistake that was done in India's recent past? He repeated, modern history of India, one mistake that we did not do again. Then I took my time. I took like 5-10 seconds, and then I said, sir, I think emergency was a mistake that we did, and we didn't repeat it after that. So he was like, yeah, I agree. And so with that, that was the last question. Like, before asking that, oh yes, he said the sex ratio of 3 states, I think 3 states or 3 states, as you know, is above 1,000. Tell me the name of that. So I was like, one was Kerala. So he's like, two. Give me the name of 2 states. The second state, I didn't know. So I was like, second, sir, I don't know, but one is Kerala. Like, okay, thank you. Your interview is over. Thank you so much. This was the least tense part of my selection. The toughest part was the moment I got outside, I was like, counter C किधर है और वो undertaking जमा करनी है और DU जाना है और एप्लीकेशन डालना है डिग्री के लिए और चक्कर काटने हैं 3-4 रजिस्ट्रार के ऑफिस में और लेके आनी है डिग्री बिफोर माय एंटायर बैच, बिकॉज डिग्री आएंगी मई में और मुझे चाहिए बिफोर लाइक मार्च, 5th मार्च से पहले चाहिए. तो उसके बाद दैट्स अ डिफरेंट स्टोरी. How everything, I went outside and my dad was like, कैसा हुआ इंटरव्यू? and I was like, अभी बात नहीं करते. और मैं घूम के फिर इनफैक्ट नहीं, मैं अंदर घूम रहा था, पूछ रहा था काउंटर सी किधर है, एंड द गार्ड्स वर लाइक, नहीं नहीं आप जाओ, आपका इंटरव्यू हो गया, आप निकलो यहाँ से. तो मैंने बोला नहीं नहीं मेरा काम पूरा नहीं हुआ, काउंटर सी कहाँ पे? तो मैं अंदर से यूपीएससी पूरा घूम के उस साइड से गया और वहां पे मुझे कई और कैंडिडेट्स मिले जिनको सेम फॉर्म भरना था. तो I submitted that on the spot, writing that the day I get my provisional, I mean the final degree, I'll show it. Until then, please consider my provisional degree. So I submitted that. I got my degree in
12 days. By I kept on mailing my principal, the registrar, and Ashutosh Mathur sir from my college was very helpful in getting me the degree beforehand, before anyone else in my batch, so that I could just submit it in time. And I that sort of really relieved me. Finally, when UPSC wrote me back, I actually posted them the final degree, and within a month, around March 19th or 20th, it came. I even started calling UPSC कि सर आपको मिल गई मेरी डिग्री मिल गई, तो उन्होंने बोला हमें क्या पता, हम वो नहीं है, आप दूसरे नंबर पे कॉल करो. तो मुझे वो कभी नंबर मिला नहीं जिस पे कॉल करना था, पर उनकी लेटर आई अच्छे से सेक्रेटरी की तरफ से, एंड इट वाज सो वेल, it was so formal and signed, and it gave me my certificate back. And they said that your candidature is, completed, it's not provisional. And जो फाइनल रिजल्ट आता है उसमें मेरे रोल नंबर पे स्टार नहीं लगा था, जो कि कई बाकियों पे लगा था जिन्होंने प्रोविजनल ही दिखाई थी अब तक. तो that was about it. Quite a story, I think, right? Anyways, uh questions. Oh damn, good zyada. Mm-hmm. Thank you for being here, guys. Hello, sir. Are you a Chelsea fan? No, I am not. I was a huge Bayern fan, but also a Man United fan. But I don't follow football anymore. Though I follow national, internet, FIFA तो मैं follow करता हूँ regularly. Breaking Bad or GOT, as I said, Breaking Bad. You're not making strategies just awesome, sir, and you really made the complex. Thank you so much. Hello, hello. Do graduation marks matter in interview? नहीं, पूछते तो नहीं है. मेरे तो काफी कम थे. अगर सरप्राइजिंगली बहुत कम है तो शायद वो पूछने. दैट्स व्हाट आई एम सेइंग, इट्स अ यूनिक एक्सपीरियंस. क्या पता आपसे क्या ऐसा कौन करेगा कि बोलेगा कि आईएफएस लिए तो मरीन आर्कियोलॉजी के बारे में बताओ. अब आप ऐसे कैसे काउंटर करेंगे? मतलब आप प्रिपरेशन तो एक लिमिट तक होती है, पर एक क्वेश्चन जैसे अब आपके मार्क्स कम क्यों आए, ये आपको पता होना चाहिए कि कम क्यों आए. ये तो आपका खुद का टॉपिक है, तो आप जो भी आप खुद के बारे में जान सकते हैं, प्रिपेयर कर सकते हैं, वो तो आपको करना चाहिए, जो कि आपके हाथ में है. Can I write, watch loving football and F1 the DAF? Absolutely. But prepare the entire history of football or F1 and your favorite people, or like watch movies like Senna and Rush. And basically you need material to talk about. तो F1 पे वो कर सकते हो आप. So 1 year ago, I started preparing for UPSC. People said you don't have the pleasing personality. I have girlish voice. I switched on to, yeah, but I wanted to prepare for UPSC. Oh no, That's not an issue. Arey, that's the fundamental issue about everything in the world right now. कि लोग क्या कहेंगे? People said, people told me. I think one really good thing about not going to, I only went to Old Rajendra Nagar for 4 days for those mock interviews, because every time I stepped out of the cab, और जो फ्लड आता है एकदम से लोगों का जो सब प्रिपेयर कर रहे हैं, इट एक्चुअली, और सबका एक ओपिनियन है और सब सोचते हैं कि आप आप में ये अच्छा है, ये बुरा है, ये चेंज करो. वो सब मेरे साथ हुआ नहीं, क्योंकि ज्यादातर मैं लोगों के कांटेक्ट में नहीं था. बट दैट इज नॉट, no one can stop you from preparing for UPSC, irrespective of the quality of your voice, which is actually okay. And also underrated. Ashlyn, कैसा है Ashlyn? Hey Jasroop. Vikram, did you noted this in your diary? Could figure it out from the details you're elaborating. I never maintained a diary, and I still don't. My father really wanted me to maintain a diary, but it's just too. I'm really lazy about writing.
बट व्हेन आई डू आई राइट इट विद माय एंटायर कंसंट्रेशन. वही आज मैंने वो ट्रांसक्रिप्ट इसीलिए नहीं लिखा क्योंकि मुझे लिखने का मन नहीं है, पर लिखने में मजा बहुत आता है. Speaking of diary, I love Diary of a Wimpy Kid. Not anymore, but if you guys are still in touch with the latest parts, I would like to know what you think about it. Uncle, which music? कौन सा music? Oh, the ones. Okay, mostly rock and roll or like rap. कम ही सुनता हूँ मैं, but AC/DC, Led Zepp, उनके भी जो heavy metal थोड़ा बहुत. But nothing beats Eminem's Lose Yourself. It's a universal pumping up song. It's 2 o'clock and suddenly got this surprise. So nice to hear you. So nice to read that comment, Sandeep. Sandeep Thakur, आप अरे वो मेरे लिए नहीं था क्वेश्चन. Anga stories. If we are questioned about our opinions regarding some government policy or any bills recently introduced that we don't support totally, how are we supposed to answer? Should it be an honest personal answer? I was a politically correct guy when it came to the Finance Commission reports. So the best part would be to open up with the context, subtly criticize it if you're not of that opinion. However, come back to like what will finally be. For example, a bill is introduced, you like it is in the parliament and it'll be debated on, and the final result will be in the act. And hopefully, in the act, maybe your personal opinion or that opinion, which would be reflected by another representative of the state, would actually take that into account, and then maybe the act would be better than the bill. You can say that if you're, but only if you're very sure of it. Chandan Singh, you used to run in Delhi Cant. I used to bully you. Huh? Okay. Yeah, I used to run in Delhi Cant and you used to bully me. I don't know. Sir, please tell us about the age criterion. Age criterion? Sorry, I can't really, it doesn't click at the moment. So please take our some time for questions. Yes, this is the time for questions at the end of the session. A girl. Hemant, I took your question. The world is doing conspiracy. And yeah, that's exactly what I felt actually when that happened. But all is well that ends well, perhaps. Sonali, could you please take us through the entire journey of your UPSC preparation, maybe in short, if possible? In short, college, padhai, prelims, mains, interview, selection, fin, the end. Sorry that was lame, but that's all I have time for. I only have 5 more minutes. Are you reading our comments, Vikram sir? Yes, I am finally. Amrita, I think not. Muskan, oh. The highlight of this chat is going to be the girls' reactions. That provisional certificate is provided so that we can use it in place of original degree. Absolutely. But my mind sort of wasn't so trusting at that point of time because of the less human contact I had for 1.5 years before that. So, yeah, it doesn't matter a lot. Yeah, that's true. Live chats, but it meant the world to me at that point of time. And maybe that's why I was a little I wasn't really worried during the interview because I kept thinking about that certificate mostly. Okay.
हाय सत्यनारायण, कैसे हो भाई? फुल इंटरव्यू इंग्लिश में दिया या मिक्स ऑफ हिंदी इंग्लिश? इंग्लिश में दिया, लेकिन वो जो सर थे वो पंजाबी और हिंदी वाले, उनके साथ थोड़ा सा हिंदी में बात किया, तो वो हिंदी पार्ट था। बाकी सब इंग्लिश में ही बोल रहे थे एंड एवरीवन वाज वेरी प्रॉपर। वही मैं कह रहा हूँ, दे आर एक्चुअली कॉन्शियस ऑफ देयर ओन कंपनी ऑल्सो, टू लुक, बिकॉज दीज आर, वही कोचिंग इंस्टीट्यूट्स वुड प्रिपेयर यू इन सच ए वे कि आपको ही, आप सबसे इंपॉर्टेंट बंदे हो उस दिन। आपको तो वो आपकी ऑटोबायोग्राफी जो लिखी है ना आपने डैफ में, उस पे वो बायोपिक बनाएंगे। तो इस तरह के क्वेश्चन पूछेंगे। असल में यूपीएससी में दे आर हाईली क्वालिफाइड, वेल, लाइक they have done so well in their careers, those officers, and they are part of the board, that they can never be petty or, you know, like condescending in a certain way that the coaching institutes tell you कि अरे अगर आपने ये हाथ हिला दिए, ऐसे ऐसे बात की है, तो आपको तो निकाल ही देंगे, ऐसे आवाज ऊंची की तो आपको तो निकाल ही देंगे, आपने अगर उनसे पंगा ले लिया आपको तो निकाल ही देंगे। ये सब वहां आप जाते हो, आपको पता लगता है उन्होंने डैफ कई बार पढ़ा भी नहीं है शायद, क्योंकि वो ऐसे रैंडम क्वेश्चन पूछेंगे। उनका काम है, they are not there for, you only. You have a lot of, you have other candidates after you had candidates before you, and they not only cater to just सिविल सर्विस इंटरव्यूज, बाकी भी सीडीएस वगैरह सबके सारा साल उन्हें इंटरव्यू लेना होता है। तो वो सिर्फ आप ही के लिए वेट नहीं कर रहे, जैसे कोचिंग वाले आपको रियलाइज करवाएंगे। वो भी बनता भी है, क्योंकि कोचिंग में आप 1,000-2,000 रुपए देते हो, तो शायद उन्हें पैसे वसूल करवाने के लिए वो भी चाहिए होता है, क्योंकि यूपीएससी में तो आप पैसे नहीं दे रहे ना। But UPSC as an institution, you would love it once you go there and you see how well the procedure is followed. It inspires you to a next level then. You never disclose your location on Instagram. I am presently in Paris. That's all you need to know, Mayank. जलसा सॉन्ग बाय सरताज सर, अमेजिंग है सर। ठीक है, सुन लूंगा। थैंक्स फॉर द रिकमेंडेशन यशप्रीत। सर रॉकिंग सॉन्ग नहीं सुनते? सुन लेता है क्या? क्वेश्चंस नहीं है। बिफोर योर इंटरव्यू आई वाज वाचिंग डॉक्टर जयशंकर इंटरव्यू। ओके, अरे Vikram sir, you really quoted load of people. Yes, I did. Old habits die hard. जय किसान, जय जवान, जय विज्ञान। Did they give you any hypothetical situation? No, they did not give me any hypothetical situation. Sir, please conduct session as to your strategy for clearing play. I have explained my strategy comprehensively in the videos that are. I just do not want to shepherd people. That's not how it works. You already have a lot of information regarding the exam, और मुझे स्पून फीड वगैरह कुछ नहीं करना है। पहले से ही आपके पास बहुत ज्यादा कंटेंट है। बाकी आप एस्पिरेंट्स देख लेना टीडीएफ का। ठीक है, taking the last round of questions. Sir, I am also from defense background. How did you prepare for it? I prepared by going back to those places, like not going back, but searching about the places I've been. वो रैंकिंग्स होती हैं जो आर्मी की, वो, और थोड़ा
पापा से मैंने बात की उनकी द अरेंजमेंट ऑफ डिविजन्स एंड कोर्स एटसेट्रा टू रिमाइंड माई सेल्फ व्हाट इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन द सेवरल आर्म्स ऑफ इंडियन आर्मी एटसेट्रा, बट वो उससे कोई क्वेश्चन आया नहीं. What position you're posted in presently? I am presently third secretary language trainee at Embassy of India, Paris. Okay. Are you going to write book in diplomacy? नहीं भाई. मैं तो what are the habits? अरे कुछ ज़्यादा explode हो रहा है. I am not taking more questions, guys. What makes you nervous is the last question I am taking. What makes me nervous? That's a good question, actually. What makes me nervous is the fact that how I assume that I am in control, but I'm never in control. So, for example, I was very confident about taking questions initially, but now it's exploding, and now it's definitely making me nervous. Not exactly making me nervous, but apologies for not taking the other questions. I do not have much time. So, thank you for being here, and I hope you enjoyed my story, which my UPSC interview was, and I hope you had a good time. काफी लेट हो गया इंडिया में तो. So hope you guys are well and all your families are taking care. It's a grave situation out there, and here as well. Europe में भी काफी ज़्यादा खराब है situation. Anyways, take care. Have a good date tomorrow, today, across time zones. See you guys.